बर्मिंघम से मैं हूँ सैयद आबिद काज़मी। मैं आपको रखूँगा बरतानिया के जनरल इलेक्शन से बाहर। So I'm Jess Phillips and I'm the Labour candidate for Birmingham Yardley, and I have been I was the Member of Parliament for 2 years before this election was called. We are fighting very hard in this campaign across all the communities in the area to keep this area Labour. The Labour Party has pledged in their manifesto to make sure that we protect the NHS, put more police on the streets, make sure that we're looking after our older people and stop some of what the Conservatives are trying to do around the dementia tax and also around stopping people's winter fuel allowance, which 16,000 people in my constituency rely on. So those are the things that we're out talking to people about. It has been an incredibly difficult campaign. The 2 terrorist incidents since we started have made this campaign incredibly hard and heartbreaking. What we know here in Birmingham Yardley, an incredibly diverse community, is that we have to stand shoulder to shoulder with all of our communities and make sure that when we think of Islam, we think of a religion of peace and not one of terror. And that is the message that I say to all of my constituents, is that we are a diverse and brilliant city and we have to remain that way, but we must work together to make sure that in the future that we are all working together to make sure these terrorist incidents can never ever happen again. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा तल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से है। मैं अर्ली 70s में पाकिस्तान से यूके आया हूँ अपने पेरेंट्स के साथ और बड़ा ही फ़ख्र से इधर यार्डली में कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन। इधर माशाल्लाह तकरीबन 15-20 हज़ार पाकिस्तानी रेजाइड कर रहे हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी यार्डली की वार्ड में। और मैं समझता हूँ कि मुझे जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मैं उनकी नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से करूँगा। और ये बड़ा ही ज़रूरी है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी ही ये चीज़ें समझ सकते हैं और यही नुमाइंदगी करे। जैसा कि बैरियर की इशू है हमारी सेमेंट्री की वीकेंड पार्टी रिलीज़ करवानी, और हमारे कम्युनिटी सेंटर्स इधर नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए। ये चीज़ें सारी जो है मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको एड्रेस करूँ और ब्रिटिश पाकिस्तानी जो यार्डली में रहते हैं इनकी नुमाइंदगी मैं करूँ एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी M.Afzal। Assalamu alaikum. मेरा नाम Jon Hamming है. I am the Liberal Democrat candidate for Birmingham Yardley, and I'm trying to get back my job as the MP for Yardley, where I used to look after everybody regardless of their race or religion. Sadly, we had another attack in London on Sunday night. I share the concerns of all of my citizens that these are fundamentally wrong. These atrocities should never happen. Innocent people should not be murdered. And I know that my local community unite to stop these sorts of things from happening. Now, as the Member of Parliament, I used to organise a multi-faith group, calling together the churches, the mosques, gurdwaras, etc., so we can strengthen community links and drive out terrorism, amongst other things. And if I'm re-elected, that is one of the first things I will do. Obviously, I'm well known for dealing with individual issues on behalf of people locally, but also national issues and international issues. So hopefully I will, inshallah, win on Thursday this week, and I'll be able to go back to looking after the people of Yardley as they used to be looked after properly by somebody who concentrates on being a full-time Member of Parliament rather than somebody interested in selling books. और यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा अक्सरियत यहाँ लेबर की है, तो आप क्या महसूस करती हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? I think लोगों को थिंक चेंज करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस, माइंड को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। 7 साल से लेबर है यहाँ पे, बहुत सारे कम्युनिटी में है कंसर्न्स जो मैं देख रहे आ रही हूँ। ट्रांसपोर्ट बहुत की सूरत हाल बहुत बुरी है, ये सैनिटेशन और कूड़ा करकट आलम रोड में, वॉशवर्ड हीथ में, सब जगह बहुत ही बैड सर्विसेज और यूटिलिटीज़ हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सर्विसेज दैट नीड टू बी। क्या प्रॉब्लम्स सामने आई हैं जो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं? I think one of the main ones is that as a Muslim we have issues with burial within 24 hours. दफनाना
24 आवर्स में बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को, कोरोना उनको परमिशन नहीं देता है, उनके पास वो मशीनरी नहीं है कुछ करने के लिए, तो एक वो चीज़ मैं सोचती हूँ कि इट इज़ वेरी अर्जेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ है हॉज हिल और एलन रॉक और वॉशमोर हीथ में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। बिजनेसेस को you have to encourage them, and conservatives are for the entrepreneurs. अब देखें सिंगल प्राइमरी ये इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कॉर्पोरेट टैक्स हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम और बिजनेस को इनकरेज कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जो एरिया आपका हल्का इंतखाब है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल सतह पर? आई थिंक देयर आर 3 or 4 थिंग्स। एक तो मैं एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करूँगी, ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ, प्रोफेशनल हूँ, मुझे लोगों को लंदन में कहना है कि मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और दूसरी चीज़ है कि आई थिंक हमें जाकर मैंने जाकर देखा है वॉशमोर हीथ में क्या कंसर्न्स हैं लोगों के, पूरा है कंसर्न, मेजर कंसर्न है, सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है, ड्रग्स मेजर कंसर्न है, तो इन सब इश्यूज़ को मैं लोकल गवर्नमेंट और लंदन में। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो असरअंदाज होगा आपके वोटर पर? आई थिंक मैनिफेस्टो है, मगर आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट। लास्ट मैसेज। I want you to support me because I will be your representative to support you in London and in Hodge Hill, and I hope you will feel that the views and the how do you call it, the mission of the Conservatives is the same as the Pakistani. Thank you very much. Thank you.